morning to all of you, and students, and everybody who is connected, interconnected from remotely from different corners. Today, I think I'll discuss with you about two examples which will illustrate you the automation in industry. One will be a temperature controller. The other one will be the speed control and decision control. These are the two topics I'm going to discuss within this 1.5 hours in time period, which will give you enough idea what is automation, how automation is being done in industries. Of course, if you remember in the beginning, in the first class, I told you that the automation has come in wide way, in very lot of varieties. But the latest automation is the intelligent instrumentation. That is the latest automation. Because digital control, up to digital control, I think I had discussed in that class. Later on, you must have been given input on artificial intelligence techniques, etc., which gives you the idea of intelligent instrumentation. So intelligent instrumentation is that instrumentation. It is a scheme or a system which uses AI techniques, artificial intelligence. This is the latest instrumentation scheme in the field of control. Earlier to this was the digital control, which was nothing but a program controller. Digital was a program. So here in this class, since I had dealt only with the digital control scheme, that is program controller, in my last class, I will give you two examples of this, which will give you enough ideas about what is automation in industry. And one step ahead is intelligent instrumentation, which is not my area right now. I can talk very long on this also, but not today's class. This will be using artificial intelligence techniques. There are intelligent algorithms like neural network algorithm, like fuzzy logic, PSO, etc., GA, optimization techniques, etc., which will go in the intelligent instrumentation. So this is not to be discussed today. I am going to discuss this program controller by giving you two examples. Let us go about the examples. The first example is about a temperature controller. Using microprocessor or microcontroller. You can either use a microprocessor or use a microcontroller. PLC can also be used. Your PC can also be used. Anything like this, which is a digital device, can be used for this purpose, right? So here, what is the basic difference between microprocessor and microcontroller? What is the basic difference? Microprocessor is basically a desktop processor. It has other devices like input, output, or memory has to be interfaced with it. And microcontroller has got these things on that very own chip. It is basically a mini computer one can say. Micro. Basically, the microprocessor is nothing but a CPU. It is the CPU, right? So you know that CPU, input output device, and memory. If you combine together, that becomes a computer. Right? So that is a mini form, a micro form of a computer with microcontroller. So input output device, memory, all these things are inbuilt in one chip, and that is known as microcontroller. So it is a dedicated computer. But microprocessor is the basic CPU, central processing unit. That is the difference. So here, let us say that this is the plant whose temperature
is needed to be regulated or controlled. The plant, whatever it is, it may be a subject, it may be a process, it may be a device, it may be anything. I call it a plant or a subject which needs its temperature to be regulated. Okay, so this has to give some input. It has some input is to be given to it, and some output is to be taken out of it. As simple as that. This is the input which comes in the form of some level signal, and I call it a voltage signal, because any control signal, it has to be in electrical form, and that is nothing, either a voltage signal or a current signal. You know that controller, voltage controller, current controller. Okay, sensor, transducers, these things must be clear to you. What is the basic difference between a sensor and transducer? Let me clear it. Sensor versus transducer. What is the difference? Yes. Sensor sensors, right? Transducer, it converts from one quantity to another quantity. Sensor is not just for converting. Is it clear? Is it correct? Transducer basically converts one form of energy into another form of energy. Okay. You say that transducer is one device which converts from one form of energy to another form. So I give you an example. Generator. Okay. Generator is fed with mechanical energy. Okay. And it gives out electrical energy. So as per your definition, generator should be a transducer. Is it a transducer? It is not. It is not. Taco generator is a different thing. Taco generator, that is the thing difference I want to know. It is not the form of energy. It is the quantity. There are two types of quantities. One is a non-electrical quantity. The other one is an electrical quantity. So electrical quantity is a signal. Non-electrical quantity may not be a signal. It may be speed. It may be any form of mechanical. It may be displacement. It may be temperature. It may be anything which is non-electrical in nature. So a transducer is that device which senses the signal or the parameter which is non-electrical in nature and simultaneously converts it into equivalent electrical signals. So it converts a non-electrical quantity into an equivalent electrical quantity. That is basically it. Is it clear? Yes. Because I have asked these questions in interviews, many forums. Many of the teachers, they do not know what is there. It is the answer what you are giving. Maximum people answer. And then I ask, is motor, is generator a transducer? They will know that is not. What is the difference? So define. How will you define transducer? Transducer is a device which senses a non-electrical quantity and converts it into an equivalent electrical. That's a transducer. Okay. So since you said taco generator is definitely a transducer because it senses speed, so much of RPM, 60 RPM, 100 RPM revolutions per minute. That is non-electrical, and converts it back into an electrical. That's right. Okay. So an input has to be given, and what is this block I have drawn? This is plant. What is this? Summer. Okay? Right. So this is plus and this is minus. This is the feedback I get. Where do I get the feedback? From the output. Okay. And in between the plant and this input versus this input, this is also an input to the summer. What is there? What is there? You talk about this temperature control scheme.
Signal processing. Suppose I call it a controller. I call it a controller. That controller will be sensing this signal and accordingly devising the control signal for the plant. It will sense the signal which is sent here as a summer of these two inputs, and that will generate through this controller a control signal to the plant. Okay. Now, in between, do you need something else? Purposely, I drawn plant first, then controller. So, in between, what do you need? Between the controller and the plant, what do you need? It is very obvious that this signal and this signal will be very less in its magnitude. So it will definitely require an amplifier. In other words, I can say it may have some distorted signal. So I want to change its shape also. I want to amplify it also. I need to have something else also, like A to B converter, B to A converter, etc. So here I will say that before controller, there has to be, after the controller, the signal which is obtained. Here you, in between these two, you will require a signal conditioner. Signal conditioner. So let me change the block diagram. This is for your reference. I have purposely drawn like this. People draw like this, but they do not know how to conclude. So I will conclude that here you need a signal conditioner. Right? So the diagram will be like this. What will it come? Signal conditioner. Signal conditioner. The signal conditioner job is to manipulate the signal here, which may be of lower region, lower magnitude. It may be a B-shaped signal. It may need A to B converter, etc. So that block is signal conditioner. Then this signal should go to the controller. Is it clear? If the block diagram is clear to you, you will be able to know the logic. Once the logic is clear, then you convert it into a circuitry. When the circuit is clear, then you become a control engineer or an instrument. Is it clear? So you have to first think in the form of a logic, then convert it into a block diagram, then convert it into a circuit diagram, and then finally rig the circuit. ये सारा काम जब आप कर लेंगे तो आप इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल इंजीनियर कहलाएंगे, और साथ ही आपको ये सब करने के लिए ब्लॉक को ट्रांसफर फंक्शन वगैरह भी आपको जानना चाहिए. सो यू गॉट टू बी ए मैथमेटिशियन, बिकॉज मैंने आपको एक चीज, इफ यू रिमेंबर लास्ट टाइम आई टोल्ड यू दैट यू हैव टू नो द स्टेटस. किसी सिस्टम को अगर आप ठीक करने जाएंगे या उसको जानना चाहेंगे, यू हैव टू नो इट्स स्टेटस. जैसे मैंने आपको कौन सा एग्जांपल दिया, रिमेंबर आई गेव यू द एग्जांपल ऑफ अ डॉक्टर. He only sees you. He doesn't know. He goes inside your body. But your body is nothing but a system, and you need to know its system, its status, and why this has gone out of control. तो वो इस जानकारी के लिए बहुत सारी सिम्टम्स आपसे लेता है, क्वेश्चंस पूछता है कि आपको गिडनेस हो रहा है, यू फील फेवरिश, देन टेम्परेचर नोट करेगा, आपका पल्स देखेगा, आंख देखेगा, जीभ देखेगा, है आला लगा के इधर उधर देखेगा. Why does he do all these things? He wants to know this. So similarly, the controller will send the signal to the plant, knowing its system, knowing its status. अभी क्या मिलेगा यहाँ पर? इसके बाद क्या ब्लॉक आएगा बताओ? प्लांट. इसके बाद प्लांट. वेरी गुड. Plant will definitely give you some output. ठीक. अब ये output अगर आपने ऐसे ही छोड़ दिया, it becomes an open loop system. Where is the control? So you need to have a feedback which will have to come here. Is it clear? My way of teaching is this: by asking questions, by making you understand
how to do it further. अगर वो रट के आप करेंगे वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है. इसमें रटने वाली कोई बात नहीं है, इसमें सिर्फ लॉजिक अंडरस्टैंड. And once you understand the logic, you all are teachers, isn't it? You will be able to teach far better to your students. We have to disseminate this kind of teaching process. Okay? And I told you one thing, that this is not teaching process, but this is teaching learning process. Out of which the few processes are adapted. And the learning is far more important. That teacher is good whose learners have learned more by listening or by observing. And that teacher may be very knowledgeable, may be very smart, may be very up to date in his information. He's not a good teacher whose lecturing has not caused any learning. Is it clear? So, this plant output will be something in the form of temperature. So you have to know the temperature. Unless you don't know the temperature, unless you know the temperature, you will not be able to control it. So इसको कहाँ ले जाएंगे आप? इसको आप temperature sensor पे ले जाएंगे. Again there is a temperature sensor, right? So now this output is in the form of analog. It is not in the form of digital. Since I am going to use this controller as a microprocessor यही होगा ना. तो microprocessor को हमें इसलिए देना है controller में. The controller is not a microprocessor, but the signal generator for the controller will be a microprocessor or a microcontroller. तो अगर मैं microprocessor में ले जाऊँ या microcontroller में ले जाऊँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एक और चीज A to D converter. So you need to have a block here which is nothing but A to D converter. So that analog output has now been converted into digital. This digital will also be again changed. First of all, it has to be given to the microprocessor. So next block is loopy. Or music, whatever it is, or computer, personal computer, PLC, whatever it is. इसके बाद कहाँ जाएगा? इसका आउटपुट तो डिजिटली होगा ना. तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर आपको क्या चाहिए? एनालॉग चाहिए. सो इट विल गो टू D to A. Is this part clear to you? Is it okay, logic wise? Now D to A converter has given a signal here which is analog in nature, and that will match with this, which is nothing but an analog. So this will be transferred here. Now this summer will produce an error here. Why this error? Because the plant temperature has changed place. And this input is nothing but a set point which can be obtained just simply from a potentiometer. Potentiometer से अगर आपने उसको calibrate करके रखा है तो वही output उसको analog signal में that particular voltage. And that is the same thing that we have obtained. So if there is a change, plant has got some change in its temperature due to heavy rains, due to your बर्फ गिर गया या बहुत लू चलने लगी तो टेम्परेचर चेंज. That is to be sensed like this, and this will through microprocessor it will convert that the control signal which will go here and accordingly it will move the control. So that signal will set the point. Microprocessor, yes, this also. This also. So this is a simple example of temperature controller wherein you can use a microprocessor or a microcontroller. Now tell me, what will you write? What will be your algorithm here? Microprocessor का algorithm क्या होगा? ये बताइए. What will be the algorithm? Because the algorithm is main program जिसको कहते हैं. वो आपको लिखना पड़ेगा. क्या लिखें?
मैंने तो आपको स्कीम बताया, but it needs to be converted into a circuitry. So you what first of all, what all things you need? You need a potentiometer here, you need a summer here, which is nothing but an integrator of amps. Very correct. Then you need a signal conditioner, say amplifier, say wave shaper, say clipper, etc. Then you use the controller. What controller do you think here which may be used? Simply a thyristor bridge can be used. थायरिस्टर के आपने जो सिग्नल है उसकी गेट पे देना है, और गेट पे आप इसको अगर वो आप उसकी फायरिंग एंगल को बढ़ा देते हैं तो क्या होगा? देर में ऑन होगा, यानी कि फायरिंग एंगल विल बी, फायरिंग एंगल इज इंक्रीज तो देर में ऑन होगा, मतलब वोल्टेज ड्रॉप आपका कम ज्यादा होगा, वोल्टेज विल बी लेसर। और इसी तरीके से अगर वोल्टेज को मुझे बढ़ाना है तो मैं क्या करूंगा? क्विक फायरिंग एंगल से वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो वोल्टेज बढ़ने से या घटने से कंट्रोलर जो है उसके असर ज्यादा कम करेगा, तो नेचुरली प्लांट जो टेम्परेचर को या इंक्रीज करे कम जाएगी या तो whole need of this thing needs to be converted into a circuit, and then you will do the circuit connections on a breadboard and check it whether it is possible. It is possible. Only thing I wanted to know, what will you write as a program here, the algorithm? क्या करेंगे? एक आप सेट पॉइंट लगाएंगे, उसको किसी रजिस्टर पर रखेंगे, देन उसको चेक करेंगे इस मोमेंट पे व्हाट इज द टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर है तो फायरिंग एंगल इसकी इतनी हो जाएगी। सो यू हैव टू राइट ए ट्रूथ टेबल, right? So that VB truth table you have to write, which is nothing but a क्या बोलते हैं बड़े टेबल को, what is the rule? अल्फा की वैल्यू लिखिए, टाइम की वैल्यू लिखिए, टेम्परेचर की वैल्यू लिखिए, सारा इट्स अ टेबल। ओके, कंपेयर करते हैं हम, कंपैरेटिव, you have to write that is the algorithm. Once the temperature is this, automatically the microprocessor will generate that particular signal, which will become analog converted to say that is signal conditioner. अगर वो टेम्परेचर कम करना है तो उस हिसाब से सिग्नल जनरेट करेगा, अगर वो टेम्परेचर ज्यादा है उस हिसाब से। एंड दिस पर्टिकुलर सिग्नल विल आल्सो गो नॉट हियर, इट शुड गो फ्रॉम D to A converter, इट शुड गो फ्रॉम D to A converter, यहाँ से उसमें भी जा रहा है, इसमें भी आप एक D to A converter लगा। सो कुड यू गेट द स्कीम? आप स्कीम समझ नहीं गए, आप एल्गोरिथम लिखो ना अपना, एल्गोरिथम तो लिखना आपका काम है, लॉजिक बताना मेरा। इफ आई गिव यू अ टास्क, say suppose I give you a task that you write the algorithm for a delay program, say 0.1 second, what will you go over? क्या करेंगे डिले? Now I will not tell you the flow chart, you have to generate the logic in your mind. क्या करेंगे आप बताइए, डिले कैसे होता है? अगर आपको डिले जनरेट करना है 0.1 सेकेंड का दिया, कुछ भी मिली सेकेंड, कुछ भी यही डिले, हाउ विल यू जनरेट? टाइमर कैसे बनाओगे भाई? टेल मी, एवरी डे आप टीवी में ये सब चीजें देखते हैं, एंड आई एम श्योर दैट आपका जो छोटा बच्चा होगा और आपका यंगर ब्रदर होगा, ही विल बी क्या बताएं? देखिए, डिले करने के लिए दो तरीका है। एक आपने बोला है काउंटर होता है, काउंट करते हैं। सपोज आई काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 स्टॉप। आई काउंटेड टू 0 to 10, ठीक है? तो ये जो मैंने काउंट किया तो इसके बीच में क्या जनरेट हुआ? स्टॉप जब तक प्रोसेस आपका चल रहा है, आई हैव जनरेटेड fixed unit. So you need to have a counter. और काउंटर को अगर मैंने ऐसे काउंट किया और मैं ऐसे काउंट करूँगा,
1, 2, 3, ऐसे भी काउंट कर सकते हैं. What am I changing? ड्यूरेशन कैसे चेंज होगा? भाई आप लोग सब इंजीनियर्स हो. What is the difference? your time ये रहे तो उसको बोलने में It is the frequency. आपको बोलना चाहिए. You should be, you are not teachers. So it depends on the frequency at which the device is working. It is the same thing. Microcontroller has a fixed frequency. Microprocessor has a fixed frequency. 8051 पर अगर आपने काम किया होगा तो आप जानते हैं कि 12.5 मेगाहर्ट्ज उसकी frequency. Things like that, different frequencies. 8085 पे भी काम किया होगा. 8085 पे भी यही होगा. 8086 पे भी किया होगा. फिर आप कंप्यूटर में चले गए. So you have to know the frequency is constant. So counting will be done at a constant pace. अब आपको करने की क्या चाहिए? ये जो 1 2 3 4 ये था, ये count. This was nothing but count. So you have to have a count for a particular day, and the counter will count it in a process. So normally आपने देखा होगा जब स्पुतनिक वगैरह भेजते हैं, जेट्स भेजते हैं, तो वो बैक काउंटिंग करते हैं. बैक काउंटिंग 1000, 999, 988, जब जीरो होगा तो शूट. ऐसा स्टाइल है. तो बैक काउंटर आपको मिला. क्या फ्लो चार्ट? I'll ask you to draw the flow chart for a delay. I have given you enough idea what should be the logic. Logic मैं आपको बता रहा हूँ. But the flow chart making is your. ले लेंगे. Run for a particular time. For example, जैसे हमारी frequency 12.5 megahertz. हाँ, वो frequency का आप काउंट कीजिए. यहाँ पर आपने लगाया. Right? क्या कर रहे हैं आप उसको? मतलब डिक्रीमेंट कर रहे हैं ना. डिक्रीमेंट. फिर क्या करेंगे आप? कंडीशन करेंगे. क्या कंडीशन होगी? इज इट 0? तो दो ही कंडीशन होगा, यस और नो. अगर यस है तो स्टॉप, और अगर नो है तो ये आपने कैसे बना दिया? हाउ डिड यू मेक इट? और आई मेड इट हाउ? आई जस्ट गिव यू द एल्गोरिथम लॉजिक. फ्लो चार्ट आप बता रहे थे ना, फ्लो चार्ट की. तो किसी भी चीज का फ्लो चार्ट, किसी भी चीज कैसे बनाएंगे? जब आपको एल्गोरिथम क्लियर होगी. इफ योर एल्गोरिथम इज नॉट क्लियर, आई एम अफ्रेड यू विल नेवर बी एबल टू ड्रॉ इट. And there are very, very complicated flowcharts. There are so many diamond boxes. Here it is only one box. There could be so many. Right? So ये चीज लगा के, then you have to convert it in the algorithm language. And microcontroller किस language पे काम करता है? Assembly language. Simply as that. So assembly language में इसको convert कर दीजिए, count निकाल लीजिए जितना delay है frequency के हिसाब से. So this is just it. So like that, you can go for a controller which is microprocessor based, microcontroller based, or even PLC based, or even PC. It is an operation. Now tell me, अगर आपको variable temperature की, ये तो आपने regulated temperature किया, constant, that if it is 40 degrees Celsius, if it goes to 1 degree Celsius more, 41, then you have fired your thermistor bridge in such a fashion that 1 degree Celsius. So again becomes 40. If it has gone 35 degrees, you have increased it by 5 degrees. Again it has got 50 degrees. So it is a regulator. But suppose you have a variable temperature. कभी आपको 35 चाहिए, कभी आपको 25 चाहिए, कभी आपको 40 चाहिए, कभी आपको 29 चाहिए. Then what will you do? You have to see the set point every time. Set point will be changed accordingly. But set point is, suppose set point is minimum. Okay, so that can always be taken as a set point. Number 1. Number 2, ये जो आपका टेबल है, इसमें काउंट चेंज होगा.
So you will not be able to always count इतना दिया तब करेगा. वो तो semi-automatic. We are talking of automation. Then what will you do? You will try to have a very visible, very big table. And that table में आपको count पहले से निकाल के रखना पड़ेगा कि इस particular temperature के लिए इतनी firing angle है इतना. इस particular temperature के लिए इतनी count है इतना firing है. And you have to do it very very thoroughly. बहुत vividly, बहुत काफी ज़्यादा बड़ा आपको exhaustive table. Right? तो उसके ऊपर आपको कंट्रोलर को ले जाइए. It will take the count. That becomes an automation. Fully automatic. Otherwise, count दे के करना semi automatic. So this is one example of automation. You may try it in your laboratory. And I have done all these things with my own hand. So if you can do, I'm telling you, you can also do all these things. मेरी कोई बहुत simple चीज है, लेकिन आपको logically clear होना चाहिए, mathematics clear होना चाहिए, and you have to know little bit of assemblies. गलत connection मत करिए. अगर आपने thyristor bridge connect करना है, you have to know what is anode, what is cathode. Then only you will be able to. So these are the things what you require. Now I will go for another example. It will take more time, and this class will go till 11:30. 11:50. So is it clear now? जरा बेटा दे. You can always have this liberty to ask them. I am telling you, if you have to learn engineering, especially, you are an electrical engineer, you are an mechanical, and so mathematician man is there to help you, the transfer function and Fourier series and Laplace, etc. Okay. But the learning will only take place if you are in laboratory training. Let me be very clear in your face, on your face, that you will only learn engineering or technology when you use your technology with your own hands, and that is only possible if you are a laboratory friendly person. If you work on computer, you will learn it. You can read lot of literature on computer, you will not be able to operate it. You will not learn it. So for learning computers, you have to work on it. Similarly, if you want to do soldering, you have to take a solder gun, solder material, solder flux, etc. and so on. By doing it, why I am telling you? Because this is a skill, and skill cannot be developed just by reading. It has to be done. Practical. For example, in love. Suppose I ask you, tell me the table of 5. You tell me 5 table. Okay. Up to 10, 50, done. You know it. Suppose I tell you that you tell me the table of 10. Immediately you will say 2, 5, 8, 7. You say. Suppose I tell you tell me the table of 11:51. You try. Nobody can know. Can you tell me what is the basic difference? Why it is so? The 10, 5, 2. Familiar concept. क्यों? Why? It is not easy. Easy वो भी है अगर आपने easy वो भी है. हर चीज easy है. हर चीज कठिन. But try to understand what I am asking. Suppose मैं आपको बोलूँगा, what's your name? Tell me. Abhishek. Now tell me a poem which you must have read in class. by any किसी भी कवि poetry statement. Not only he, I will not be able. Nobody will be able. What is the reason? Try to understand. It is simply because you must have used your name so many times. You have written your name. You have spoken to someone. जैसे मैंने आपको पूछा, spoken to someone in your name. You have
you have attended classes in your name, you have filled forms, ठीक है, बट वो कविता तो वही उसी जमाने में जब पढ़ा था, तो क्या डिफरेंस है? वो 1139 तक टेबल क्यों नहीं बोल पाया? क्योंकि आपने फ्रीक्वेंटली उसको यूज नहीं किया. इट इज द यूज, इट इज द रिपीटिशन व्हिच मैटर्स. 5 to 10 का आपने पता नहीं कितने बार बोला होगा, लोगों ने काम किया होगा, लेकिन 1139 शायद ही कभी काम आया, तो मल्टीप्लाई करके काम ना. So it is, the difference is that 1139 is a knowledge for you. 2, 5, 10 etc. name etc. is skill. So आपके fingertips. That is why skill is much more important than knowledge. और skill आया कैसे? Without knowledge तो skill नहीं आया. Repetition. आप रिपीट करते जाइए 1139 भी उतना ही आसान होगा जितना किया. Nobody must have told you these things, but try to understand. There are so many things which are happening in front of us, around us. What is the reason? So one has to be skilled. It is not the knowledge which matters, it is the base. Knowledge is the base, but skill is where you are riding on it. आप कुछ कर सकते हैं. सोल्डरिंग आप जितनी मर्जी पढ़ लीजिए, आप किया नहीं तो आप कर नहीं पाते. You will not be able to tell me is that dry solder or it's a और जो अच्छे सोल्डर करते हैं, प्रैक्टिस है, वो तो देख के बता देंगे, चमक देख के कि ये सब ड्राई सोल्डर. So this is what is happening. Swimming is not knowledge. हम आपको बता दें, एक बार आपको आगे करना, एक बार पैर को पीछे, स्विमिंग आ जाएगी. साइकिल में हम आपको बता दें, भैया ब्रेक है, सीट है, बैठ जाओ, 2 चक्के हैं, ऐसे ऐसे चलाओ, चला लेंगे. So you got to do it, and do it not only once but number of times, repetition. So that is it. Okay. तो जब तक आप ये नहीं डेवलप करेंगे, लॉजिक नहीं लगाएंगे, तब तक आप बहुत बढ़िया इंजीनियर या बहुत बढ़िया टीचर या बहुत बढ़िया एजुकेशन. So try to be laboratory. That was my message. Okay. Now let us take this second example of speed control. Speed control of a DC shunt motor. So you are saying that I am stressing on a shunt motor and DC. Why? Can you tell me? Why not AC motors? That can also be done. But I am stressing on DC motor and DC shunt motor. That series motor को नहीं दिखा. The speed of a DC shunt motor can be controlled by the whether it is below the speed or above the speed. So mind it, 90% of industrial drives use AC motors and 10% use DC motors. That does not mean that this DC motor 10% is non-important. It is very, very important. Whenever you want a variable as well as a constant speed drive, you will go for DC. This is the first reason why I am telling you the example of DC. Second thing, I have chosen shunt motor. Why? The message is here. Shunt motor is a unique drive. It's a unique motor. It can be used as a constant speed drive, almost constant, as well as a variable. दोनों ही बन सकता है इससे. अगर आपको कांस्टेंट स्पीड की आवश्यकता है तो थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है, तो वहाँ डीसी शंट मोटर आप यूज कर लीजिए. जहाँ आपको वेरिएबल स्पीड ड्राइव की आवश्यकता है, वहाँ पर भी आप इसको यूज करें. दैट इज व्हाई आई हैव गॉन फॉर दिस शंट मोटर. इज इट क्लियर? नाउ टेल मी, डीसी मोटर्स में स्पीड कैसे वेरी कर सकते हैं? As you said very clearly, that there is a term called base speed and there is another speed called above base speed. What is the base speed? Base speed को normal speed भी बोलते हैं. Either it is base speed or it is normal speed. तो base speed या normal speed जो है वो प्लेट के ऊपर लिखा है.
अगर आप मोटर खरीदने जाएंगे, कभी अगर मौका मिले तो ये सब कीजिए. You must go to the market also. You must know who are the manufacturers. You must know what is the rate of a 9 HP motor, 10 HP motor, 7.5 HP motor. And you also know what are its specifications. अगर ये सब नहीं जानेंगे तो आप कभी खरीद ही नहीं पाएंगे. किस टाइप के टीचर हैं आप, किस टाइप के इलेक्ट्रिकल, बेसिकली तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, और मैंने कभी मोटर ही नहीं खरीदा लाइफ में. मैं कौन सा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मुझे पता ही नहीं उसके कौन कौन सी स्पेसिफिकेशन होगी नहीं, उसकी पार्ट्स तो बाद की बात है. तो आई मस्ट अंडरस्टैंड दीज थिंग्स. आई मस्ट नो कि व्हाट इज द चीपेस्ट थिंग, हाउ कैन आई डू द मार्केट सर्वे. दीज चीजें आपको बहुत अच्छी आनी चाहिए. उसमें लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, मोटर को सिर्फ अच्छी तरह देखना, उसकी टाइप देखनी पड़ेगी, पैम्फलेट देखिए, हुआ तो मैन्युफैक्चर. अब ये जो नॉर्मल स्पीड होता है, वो जिसको या बेस स्पीड कहते हैं, वो सपोज कर लीजिए है 900 आरपीएम. तो मोटर कैन बी, इसको डिजाइन ऐसे की जाती है कि इट शुड रन ऑन 900 आरपीएम फॉर द बेस्ट रेशियो. But it does not mean it will not run at below 900 RPM, and it can also go to some extent I am saying, above 900. तो अगर ऐसा करना है तो हम कौन सा स्पीड कंट्रोलर यूज करते हैं? स्पीड कंट्रोलर नहीं, दोनों ही में हम दो किस्म की स्पीड कंट्रोल मेथड यूज करते हैं. वन इज नोन एज द वोल्टेज कंट्रोल मेथड. Armature, of course. Armature voltage control. And the other is field control. The field control is the field current control. Okay? इसको फ्लक्स कंट्रोल भी बोलते हैं. फ्लक्स कंट्रोल मेथड इज दैट बिकॉज आप जानते हैं कि स्पीड जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इफ यू राइट द इक्वेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर्मेचर वोल्टेज बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्लक्स. दिस इज अ सिंपल इक्वेशन. क्या मतलब हुआ कि अगर मैं वोल्टेज को बढ़ाऊंगा तो स्पीड बढ़ेगी, इस वोल्टेज को आर्मेचर. Armature voltage increase means speed will increase. Armature voltage decrease means speed will decrease. But this is limited to your normal speed. And flux जो आपका नीचे है, फ्लक्स को मैं इंक्रीज करूंगा तो क्या होगा? स्पीड घटेगी. इंक्रीज करने पर स्पीड बढ़ेगी और डिक्रीज करने से बढ़ेगी. फ्लक्स को घटा सकते हैं क्या? दैट मीन्स व्हाट? स्पीड कैनॉट बी डिक्रीज बाय फ्लक्स कंट्रोल मेथड. सिंपली एज दैट, बिकॉज फ्लक्स इज डिपेंडेंट ऑन द फील्ड करंट and the field current can only be decreased, it cannot be increased. कैसे डिक्रीज करेंगे फील्ड करंट को? बाय पुटिंग अ रेजिस्टेंस. सिंपली करंट को आप डिक्रीज कर सकते हैं लेकिन करंट को आप बढ़ा नहीं सकते. फील्ड करंट जब बढ़ा नहीं सकते तो फ्लक्स विल नॉट इंक्रीज, फ्लक्स कैन ओनली बी डिक्रीज. जब डिक्रीज करेंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी? सो व्हेनेवर आई वांट टू गो मोर देन 900 आई विल गो फॉर फील्ड कंट्रोल. व्हेनेवर आई वांट टू गो for base speed control regulator, I will go for armature. So maximum speed control is used by armature voltage control method. Minimum is used by field control. Is this one clear? So that is why I have written speed control decision motor using armature voltage कंट्रोल. सर वेरिएशन ज्यादा चाहिए हो तो वेरिएशन कर लीजिए, आप मुझे वोल्टेज नीचे तक कर लीजिए. मान लीजिए 400 या 900 से लेके 1600 तक वो मोटर का एक्सटेंट है 1100 तक मैक्सिमम जा सकता है. नहीं जाता है, उस पर कभी नहीं करिए. तो उसके लिए क्या सजेशन रहेगा सर? 900 कभी नहीं करते.
मैक्सिमम स्पीड जो 1100 अगर है, मैन्युफैक्चरर ने कहा है, तो 1100 क्रॉस कर दी। तो फिर 1600 के लिए भी क्या करेंगे? 1600 करेंगे ही नहीं, 1600 आर्बिट्री नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए ऐसी कभी कोई केस आता है, अरे भाई ऐसा उस मोटर को आप नहीं यूज करते, ऐसा केस कैसे आ जाएगा? आप कहें, आज आप कहें, आपने यहाँ 2 केस लगाए थे, मैंने कहा बेस स्पीड और मैक्सिमम स्पीड। बेस से ऊपर लेंगे, बेस से ऊपर लेगा, बेस से नीचे भी लेगा, और मैक्सिमम स्पीड जो अगर 1100 है उसके लिए नहीं। बेस से नीचे कहाँ ले जाएंगे? नीचे कहाँ ले नीचे ले जाएंगे, उस समय नीचे भी ले जाएंगे। अच्छा भी दिस इज ग्रेटर के लिए हमें फीड करना है। ठीक, ग्रेटर नहीं होगा। तो रेगुलेटर जहाँ है कम ज्यादा, लेकिन बेस स्पीड के नीचे ऊपर, वहां पर ये ज्यादा यूज होता है। दैट्स व्हाई आई एम स्ट्रेसिंग ऑन दिस। इज इट क्लियर? ओके, लेट अस सी व्हाट शुड बी द स्कीम। Here also I will give you an example of thyristor bridge, जिससे कि मैं वोल्टेज कंट्रोल करूंगा। मेरा एम क्या है? आर्मेचर वोल्टेज को कंट्रोल। ठीक, यही है मेरा। What is this? This is nothing but a three-phase ordinary diode bridge, rectifier bridge. Okay? मैंने जानबूझ के थ्री फेज, सिंगल फेज भी हो सकता है। सिंगल फेज अगर हो तो उसकी लिमिट 220 वोल्ट तक है। सिंगल फेज से आउटपुट जो है 220, 225 ऐसा ही आती है। बट सपोज यू वांट मोर देन दैट कंट्रोलर, तो आपको थोड़ा सा थ्री फेज का कॉन्सेप्ट जानना चाहिए, इसीलिए थ्री फेज। नाउ this is a simple diode. How many diodes are there? B1, B3, B5, B4, B6 and simple diodes, rectifier diodes. किसी डायोड का नाम बताइए जो आपने यूज किया हो। 1N, 1B, ऐसा तो नहीं होता, 1N होता है। 1N, 40001, 40002, 40007, 1001, 1002, 1007, 1005, BY126, BY126, बहुत सारे डायोड्स हैं। ठीक है, तो सपोज कर लीजिए कोई भी आपने रेक्टिफाई किया। अगर मुझे ज्यादा पावर की आवश्यकता है तो मैं ये डायोड सिंपल रेक्टिफायर डायोड नहीं लूंगा, बट आई विल टेक पावर। पावर डायोड मींस 16 एम्पियर रेटिंग, 10 ampere rating, 12 ampere rating, 16, 32 ampere, etc., etc. Depending on what is the load. लोड क्या है, उसकी कितनी एम्पियरेज है, उसके हिसाब से हम डायोड की रेटिंग। तो हमने जानबूझ के थ्री फेज की बात करिए, पावर डायोड की। तो अगर आपको थ्री फेज थायरिस्टर ब्रिज बनाना है, दिस इज नथिंग बट अ डायोड ब्रिज, थ्री फेज फुल वेव ब्रिज। uncontrolled bridge. जॉन सर वहाँ पॉलिटिकल पोस्ट लगा के एक बुजुर्ग रोड था, वो एनडीए का मेंबर बना हुआ था बाहर Uncontrolled bridge, right? Why uncontrolled? Because it's basically diode, right? So cover to terminate with three phase full wave uncontrolled bridge, right? क्योंकि डायोड यूज किया। पहले इसकी वर्किंग समझ,
कैसे ये फंक्शन करता है, हाउ डज इट फंक्शन, देन ओनली वी विल बी एबल टू कंट्रोल। कैन यू टेल मी की वर्किंग, हाउ डज इट फंक्शन? आपने यहाँ पर मान लीजिए दीज आर दी फेजेस ए बी एंड सी, इसमें 3 फेज सप्लाई दे दी 50 हर्ट्ज की 415 वोल्ट सप्लाई दे दी। Then how does it work? Okay. Diode का यही धर्म होता है, diode is always like this, that it only works on forward. जब आपका ये फेज आ रहा है तो this diode becomes forward bias, right? करंट ऐसे जाएगा। अब दूसरा एक पाथ इसको चाहिए, यहाँ अगर ये नहीं कर रहा है काम, इधर से जाके लोड के थ्रू जाके आइदर इसके थ्रू आएगा और इसके थ्रू आएगा। दैट मीन्स इधर ए बी फेज विल वर्क और ए सी फेज विल वर्क, डिपेंडिंग ऑन विच टू डायोड्स आर फॉरवर्ड। वो कैसे समझेंगे कि किसी एक मोमेंट ऑफ टाइम पर जब आपने स्विच ऑन किया कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस्ड होगा, एक हाईएस्ट पोटेंशियल पे होगा, एक लोएस्ट पोटेंशियल पे होगा, वही पेयर ऑफ डायोड्स की, अदरवाइज सर्किट पूरी नहीं होगी। हायर पोटेंशियल एंड लोअर पोटेंशियल या पॉजिटिव एंड नेगेटिव। इसमें क्या होता है कि इसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा 3 फेज वेव डायग्राम का पता होना चाहिए। बता सकते हैं अगर आपकी एक फेज ऐसी है 0 5 एंड 2, ठीक है ना, तो यहाँ पर हो गया 180, ये हो गया 90, ये हो गया 270 और ये हो गया 360। मान लीजिए ये ए फेज है, बी फेज कहां से जाएगा, ऊपर से जाएगा, कहां से जाएगा, और ये मतलब 120, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए 60 ये, ठीक है, तो ये 60 120 180 यहां से जाएगा ये, लाइक दिस, और सी फेज कहां से आएगा, कितने से, यहाँ के 120 से, यानी कि 60 इधर से जाएगा, ठीक है ना, और ये यहां से आएगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक है ना। अब देखिए इस दौरान यहां से लेके 60 डिग्री तक ये कौन सा पॉजिटिव है, ये तो पॉजिटिव नहीं है, हाँ ये पॉजिटिव है और सी, ठीक है। तो ज्यादा आप देखेंगे कि सी इज नेगेटिव, बी इज ऑल्सो नेगेटिव, बी इज नेगेटिव, तो कौन सा आपका फेज वर्क करेगा, एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। इसको अगर आप ठीक से ड्रॉ करें ग्राफ शीट पे तो बहुत क्लियर हो जाएगा। यू मे टेक इट एज अ टास्क कि आप इसको ड्रॉ करिए और प्रेफरेबली कलर से, ए बी सी कुड बी ड्रॉन ऑन थ्री कलर्स, RYB या कोई से भी कलर ले लो, तो आपको ज्यादा क्लियर दिखेगा। किसी एक इंस्टेंट में सिर्फ 2 ही डायोड आपके, एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये हमने ड्रॉइंग गलत कर दिया ना, ये ड्रॉ गलत हो गया, ये सी जो है इस तरह से नहीं आएगा, सी यहाँ से जाके इस तरीके से जाएगा, ये जाकर ये यहाँ से जाएगा, समथिंग लाइक दैट, तो बी नेगेटिव है ज्यादा। अब इसलिए कह रहा हूँ कि एक शीट चाहिए मुझे, शीट से ड्रॉ अच्छी तरह कर सकते। तो देन यू फाइंड आउट कि 0 to 60 डिग्री, मान लो आपका D1 और C मीन्स A इज D1 और C मीन्स D2, ठीक है, D2 ये ऑन हो गया, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि एक इसमें से कंटिन्यू करता रहेगा लेकिन दूसरा जो है वो कम्यूटेट हो जाएगा। तो मान लो 60 डिग्री टू 120 डिग्री, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ड्यूरेशन, दीज आर ड्यूरेशंस। आप देखेंगे अगर D1 आपका कंटिन्यू कर रहा है
तो D2 विल बी रिप्लेस्ड। तो D2 जो रिप्लेस होगा, D2 है कहां पर, ये सेकेंड हाफ में है, दिस इज फर्स्ट हाफ, अपर हाफ, इसको पॉजिटिव हाफ भी बोल सकते हैं। तो ये जो है आपका, ये जो तीन डायोड है D4, D6, D2, ये आपका नेगेटिव या लोअर हाफ है। क्लियर? अपर हाफ या पॉजिटिव हाफ में कौन कौन से हैं, D1, D3 एंड D5। लोअर हाफ में कौन कौन से हैं, D4, D6 एंड D2। ठीक, तो D2 लोअर हाफ में था, D1 अपर हाफ में था। अगर D1 कर रहा है आपके हिसाब से, मतलब वेव डायग्राम के हिसाब से, देन D2 विल बी रिप्लेस्ड। तो D2 रिप्लेस होने से D2 किस हाफ में है, नेगेटिव हाफ। ये रिप्लेस या तो D6 या D4 से है कि नहीं, ऊपर से तो नहीं हो जाएगा। सो नाउ D1 इज ऑलरेडी वर्किंग, D4 कैनॉट टेक प्लेस, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट होने का मतलब वोल्टेज डिफरेंस ही नहीं है, तो कंडक्टिंग नहीं करेगा। सो D2 विल बी रिप्लेस्ड बाय D6। दिस इज लॉजिकली कमिंग ऑटोमेटिकली। अब थर्ड में 120 टू 180 डिग्री, D6 करेगा तो D1 रिप्लेस होगा। D6 आपका किधर है, यहाँ है। D1 रिप्लेस करना है तो इधर D3 और D5, D3 कैन नॉट बी रिप्लेस। तो 180 टू 240 आपका D5 रहेगा, D6 रिप्लेस करेगा। D5 आपका कहाँ है, यहाँ है, एंड D6 has to be replaced, so it has to be D4। 242 300 डिग्री, D4 रहेगा, D5 रिप्लेस होगा। D4 आपका यहाँ है, D5 आपका यहाँ है, so it D3। और 6 आपका क्या हो जाएगा, 300 टू D3 रहेगा, D4 रिप्लेस होगा। D3 is here and D4 रिप्लेस होगा, so it has to be D4। इसके बाद क्या होगा, ये रिपीट हो गया, दिस इज 360 डिग्री मीन वन साइकिल कंप्लीट। अब इसके बाद फिर से ये यही आएगा। दिस इज द वे, इसको कहते हैं सीक्वेंसिंग, कंडक्शन सीक्वेंसिंग इसको बोलते हैं। कंडक्शन सीक्वेंस, किस सीक्वेंस में करें, अपने आप ही होता है। इट इज ऑटोमेटिकली ऑफ इट्स ओन बाय डिफॉल्ट, यू कैन से, बट दिस इज नॉट यूनिक। मैंने जो शुरू किया था, तो मैंने जहां स्विच ऑन किया था, तो मैंने 0 से आपको ए शुरू किया था, दैट वाज स्टार्टिंग। यू नेवर नो ए से स्टार्ट होगा या बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट, यू नेवर नो इट, क्योंकि इट विल डिपेंड ऑन द टाइमिंग ऑफ द स्विचिंग। सो दिस इज नॉट a unique conduction scheme. This can be different also, but what is the logic here, can you understand? You will find that two diodes are conducting for, a pair of diodes are conducting for 120 degrees, लेकिन सिंगल डायोड कितने देर के लिए कंडक्ट कर रहा है, 60 डिग्री। You see D1 को ले लीजिए, D1 has conducted from 0 to 60, it has also conducted from 60 to 150. You check with all the diodes. So the conclusion is single diode conducts for 120 degree, but a pair of diodes conduct for 60 degrees, and next 60 degree another pair will be। वो कौन सा होगा, मैंने को लॉजिक बताया कि सेम वर्टिकल लिंक के डायोड कंडक्ट साइमल्टेनियसली नेवर कंडक्ट, उनको बोलते हैं वर्टिकल लिंक्स। मींस D1 D4 D3 D6 and D5 D4, they are the vertical links। So same vertical link diode will never conduct sound, and one diode will conduct from the upper half, that is positive half, another from the lower। तो यहाँ पर ऑलवेज आपका पॉजिटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव। यहाँ से करंट इन हो रहा है, दैट इज पॉजिटिव, यहाँ से करंट आउट होगा, दैट इज नेगेटिव।
Is such point clear? अब जब ये it is not a unique sequence, there are different sequences. और कौन सा sequence हो सकते हैं? Can you tell me? With the logic what I have told you. Other sequences you can yourself write. Suppose I start not from D1. I can start from D1. I can start from D3. I can start from D4. These are the positive diodes. So it can start either from D1 or from D3 or from D5. D1 के साथ अगर D3 के start में start करता हूँ तो D6 will not go. Either it will be D2 or it will be D4. Similarly D5 से start करते हैं either it will be D6 or it will be D4. So there can be so many sequences. But the cycle will remain same. Once it has triggered in that sequence, it will follow the same sequence. Sequence will not change. Once followed a sequence will not change. So that is the logic. ये तो working. अगर मैंने इसको कंट्रोल्ड ब्रिज बनाना है तो हम क्या करेंगे? Controlled bridge. Then I will replace them by thyristors. If I want to use a fully controlled bridge, then I will use all the 6 thyristors. If I am using half controlled bridge, then I will only use these as thyristors and these as diodes. Clear? Is this one clear? So I am going for a fully controlled bridge. Fully controlled bridge. Now, उसमें तो by default start हो गया था. इसमें होगा क्या? नहीं होगा. What do you have to do? You have to fire the gates. Signal आपको gate पे देना. You have to give the signals, gating signal या firing signal at the gates of the thyristors. तो आप ये signal कहाँ से लाएंगे? How will you obtain the signals? And that too आपको किसी एक sequence में देना पड़ेगा. Now these are not diodes, these are thyristors. T1, T3, T5, T4, T6 and T2. Clear? अब इसको कैसे लाएंगे? ये this is automatic. अभी तक तो पूरा ठीक था. सीक्वेंसिंग आपको पता है. Suppose these are the sequences. Suppose ये सीक्वेंस आप फॉलो कर रहे हैं. यहाँ पर क्या हो जाएगा? T1, T2, T1, T6. Are you getting it or not? समझ में आ रहा है कि नहीं? T5, T6, T5, T4, T4, T3, T3 and these are the sequences, right? These are the sequences. I have written only one sequence for one cycle. It could be another sequence, right? Because I have told you very categorically that this is not a unique sequence. It has to be different. It can be different, but you have to fire this bridge according to this sequence. वहाँ पर आपको automation की आवश्यकता है. You will require an automation. How will you generate? You know that these thyristors need to be fired or signaled at their gates. वो signal आप कहाँ से लोगे? बताइए. We need to generate pulses at specific times. That is true. Number one is you have to generate the pulses because we are going for pulse triggering. We are going for pulse triggering. Pulses generate करने होंगे और वो pulses भी sequentially इन सबों को देना. वहाँ पर मैं या तो माइक्रो प्रोसेसर यूज कर लूँ या माइक्रो कंट्रोलर यूज कर लूँ या PLC यूज कर लूँ या PC यूज कर लूँ. Again, it is a digital controller, program controller. But mind it, it is not an intelligent controller. इंटेलिजेंट कंट्रोलर नहीं है ये. इंटेलिजेंट कंट्रोलर तब होगा जब ये कुछ डिसीजंस भी लेगा, जिसकी बात मैंने आपको बिल्कुल नहीं करी.
artificial intelligence technique लगा के. तो intelligent algorithms you can use, but I am not using it. I am only going up to digital control and back to programmed controllers. कैसे करेंगे बताओ? किस टाइप के सिग्नल चाहिए? Okay, we need a pulse like this. And how many pulses you need? कितने चाहिए आपको? And so on. This is pulse number 1, 2, 3, 4, 5, and 6. You need 6 pulses, isn't it? Why 6? Because there are 6 pulses. And that is why it is known as 6 pulse bridge. इसको बोलते हैं 6 pulse triggered bridge. 6 pulse triggered full wave, fully controlled thyristor bridge. Is it point clear? अब ये बताइए कि ऐसे पल्स रेक्टेंगुलर पल्स जनरेट करना आसान होता है क्योंकि you could have a pulse like this also. ऐसा भी होता है. ये कैसे जनरेट होता है? How do you generate such pulses? RC सर्किट से. RC सर्किट के थ्रू जनरेट करते हैं, लेकिन वो डिवाइस कौन सी होती है जिससे आपको ये मिलता है? It is a relaxation oscillator. To relax as a multi-vibrator. So relaxation oscillator using a UJT. UJT से भी हो सकता है, FET से भी हो सकता है, कई तरीके से होता है. Sawtooth भी जनरेट कर सकता है, right? But what is important here is अभी नहीं, 15 मिनट चाहिए, 15 minutes. Come after 15 minutes. What you need is this width and this magnitude is very, very important. Can you tell me why? This is important and this width is important. इसको pulse width बोलते हैं and pulse magnitude. Suppose I get a pulse like this. This pulse and this pulse are not matching. This is a pulse train actually. So many pulses continuous. So I call it a pulse train. I need to have a particular magnitude of the pulse and I need to have a particular magnitude pulse width also. This will perhaps not do. उसी तरीके का है लेकिन ये नहीं चलेगा. आप बता सकते हैं क्यों? Why it is so? Because there is a minimum amount of gate current that is required for the. That is true. If you have read thyristors, then there is a term called IG minimum and term called IG maximum. IG maximum को आप क्रॉस नहीं कर सकते. You can never go beyond IG maximum for a thyristor. Otherwise इसका गेट पंक्चर हो जाएगा. And similarly IG minimum से नीचे आप नहीं जा सकते. You cannot go below it. It will never fire. आप 1000 pulses दे के दे लीजिए, फायर हो गई. So IG minimum, for example, suppose कर लीजिए किसी thyristor का, किसी SCR या thyristor का IG minimum है suppose 11 milliamperes and this is suppose 400 milliamperes. ये सिर्फ आपको रटने की जरूरत नहीं है, इसका टेक्स्ट आता है, उसको देख सकते. I give you an example of 11 milliampere as the IG minimum, IG maximum is 400 milliampere. What does it mean? Tell you. It is very clear that you will never be able to go beyond 400 milliampere. If you go by chance, then it will puncture the thyristor. Similarly, below 11 milliamperes, it will never puncture, not fire. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये रेंज बन गया. This is range wherein you can have the control. In other words, what do you say? इस रेंज को क्या कहते हैं? This is the range in which the firing angle will be. Is it clear? अगर मैंने 11 milliampere, that is the minimum gate current हमने दिए है, तो firing angle क्या होगा? Can you tell me? 90. Firing angle will be maximum. बहुत देर बाद फायर करेगा, स्लो फायरिंग होगी.
तो अगर मुझे फायरिंग एंगल को यानी कि वोल्टेज आउटपुट को अगर कम करना है, if I want to reduce the voltage output at armature voltage, then I have to give firing angle at minimum. And if I want to give the maximum firing angle, that means voltage minimum, sorry, voltage will be minimum here, voltage will be maximum. Minimum firing angle का मतलब minimum गेट करने का है minimum firing angle, एंड इसका मतलब मैक्सिमम. तो अगर मैं उसको देना चाहूं जल्दी से, तो जल्दी से देने का मतलब फायर क्विक. फायर क्विक मीन्स आई जी अल्फा मिनिमम, दिस मीन्स फायर क्विक, एंड अल्फा मैक्सिमम मीन्स फायर लेटर. ठीक, एग्जाम्पल मान लो ये है 3 डिग्रीज या 30 जो भी है, और ये मान लो है 90 डिग्री. तो 90 डिग्रीज में मैक्सिमम फायरिंग एंगल पे वोल्टेज कितनी होगी? इसमें वोल्टेज मिनिमम हो जाएगी, और इसमें वोल्टेज कितनी होगी? तो अगर आपको स्पीड को बढ़ाना है तो क्या करेंगे आप? वोल्टेज को बढ़ाएंगे तभी तो स्पीड बढ़ेगी, यानी कि आप फायरिंग कम करेंगे. और जहां रेगुलेटर बना के नहीं, सो यू हैव टू पुट द सिग्नल in such a fashion that the firing angle it changes between minimum and max as per its. Will it not depend on the pulse rate? Yeah, definitely. अभी तो वो मैं अभी नहीं बोला, नहीं, मैंने तो सिर्फ आईजी मिनिमम की बात की. अब आता है वो पल्स विड्थ. पल्स विड्थ किस पर डिपेंड करेगा? फ्रीक्वेंसी तो हमने बना दी ना, वो तो हम जनरेट करेंगे. कितनी देर तक इसको रखेंगे आप, वो इम्पोर्टेंट है. This should be at least equal to turn on time of the device. So ये जो है ये equal to or greater than turn on time of the device. Is it clear? अगर इससे कम रखेंगे तो थायरिस्टर आप मैग्नीट्यूड कर दिया आपने, लेकिन पल्स विड्थ को आपने ज्यादा कर दिया या कम कर दिया, नहीं होगा. ज्यादा करने को हो जाएगा, कम करने को नहीं होगा. So this requires to be more than or equal to 10. Is it clear? अब ये दो लॉजिक के हिसाब से ये पल्स विड्थ आपको बनती है. तो क्या लॉजिक है इसके अंदर बताइए? जस्ट व्हाट इज द लॉजिक? यू हैव टू जनरेट दिस पल्स विड्थ एंड कनेक्ट इट देयर. यू हैव दैट 24 पिंस रिबन्स आते हैं ना, उसको बनाइए और माइक्रो प्रोसेसर के एंड में उसके जैक में लगा दीजिए, वो आप तो जाता रहेगा. तो बताओ कैसे लिखोगे इसका? व्हाट इज दिस? Amplitude. Like what is this? This is nothing but a positive edge. And what is this? Negative edge. So there is a positive edge and there is a negative edge. Positive edge के लिए आप क्या करेंगे? Out 0 0 करेंगे या out 0 1 करेंगे? क्या लिखेंगे? High बनाना है आपको. So you will write out 1 यानी कि 0 1 hex. Because it's microprocessor, microcontroller, what is assembly language. अगर आपको C++ में लिखना है तो आप C+ में भी इसको लिख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू यूज योर PC, देन यू विल नॉट राइट 0 1 हेक्स एट दिस एंड दैट. यू विल राइट इन C और व्हाटएवर हायर लैंग्वेज यू. आपने ये निकाला. अब इसके बाद क्या करेंगे आप? व्हाट इज दिस? नो, व्हाट इज दैट? दैट T-on इज नोन टू यू बिकॉज थायरिस्टर का T-on हमें पता है, कुछ मिली सेकेंड होगा. टर्न ऑन कितना होता है? 10 माइक्रोसेकंड होता है. 10 माइक्रोसेकंड, 20 माइक्रोसेकंड. दिस फास्ट थायरिस्टर्स आर वर्किंग दैट फास्ट. तो वो तो पता है मुझे डिले. यू हैव टू जनरेट अ डिले, नथिंग बट डिले. जनरेट अ डिले. उसके बाद क्या करेंगे? दिस इज द एल्गोरिथम आई एम टेलिंग यू. उसके बाद क्या करेंगे? डिले के बाद आउट 0 0, फिर ये वाला डिले, फिर रिपीट. The first pulse will be a second pulse will be and continuously the train. Okay. Now what are the turn on time, turn off time, etc. 60 degrees is यहाँ से लेके यहाँ तक. 60 degrees है ना? Sorry, हाँ, यहाँ से लेके दूसरा pulse जब चले, ये 60 degrees है. 60 degrees means how much? 60 degrees means how much? It has to be converted into milliseconds. कितना है? How much is 60 degrees?
You have to first you have to convert it into radians and अरे रेडियंस की जरूरत ही नहीं है यार, डायरेक्टली अब बताओ ना. 360 degrees is how much? 360 degrees is how much? That is 2 pi radian. It is how much? 360 degrees the full cycle, isn't it? yes, it is 1 hour. 1 hour. Or 1. क्या बात कर रहे हैं आप? 50 हर्ट्ज तो आपकी सप्लाई है, तो उसके हिसाब से करो ना. 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी 1 by t होता है ना, f is equal to 1 by t होता है, तो t is equal to 1 by f, 1 by 50, 20 मिलीसेकंड. दैट्स इट. आप कैसे इंजीनियर हो भाई, समझ में नहीं आता मुझे. रितुला जी, इनको थोड़ा हल्का सा बेसिक्स क्लियर करो. They do not know what is the time period कितना है, periodic time is 20 milliseconds. Okay, 20 milliseconds matching with 50 hertz. 60 hertz होगा तो दूसरा होगा. So this is nothing but 20 milliseconds. तो 20 milliseconds अगर आपकी full cycle है 360 डिग्री, तो 60 डिग्री कितना होगा? 1 by 3. 1 by 4 नहीं, 1 by 3. 1 by 3 means 7 से कुछ कम हुआ ना, 6.5. ठीक है. तो आपको टाइम पता है, टाइम ये भी पता है, ये भी टाइम पता है, तो ये टाइम उससे माइनस कर दीजिए, पता होगा. आ रहे हैं. इज इट क्लियर? जब आपको टाइम पता हो गया, डिले पता हो गया, ये टाइम भी पता हो गया. हाउ मेनी डिलेज आर देयर? एक तो ये डिले है, एक ये डिले है, और कौन सा डिले? आपने यहाँ से तो नहीं शुरू करना है. कहाँ से शुरू करना है? फायरिंग एंगल से शुरू करना है. ये तो ओरिजिन है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन है, एंड पॉइंट ऑफ ओरिजिन के बाद जितना आप कंट्रोल करना चाहिए उसके बाद फायरिंग एंगल मिला है. तो दैट इज द फर्स्ट. सो डिले 1 is the firing angle. This is not delay 1, this is delay 2. What is delay 1? आप बता सकते हैं? जो डायग्राम आपने बनाया था उसमें आप देखेंगे कि एक वेव दूसरे वेव को काट रहा है. That point of intersection में you will never know which phase is positive. A भी पॉजिटिव हो सकता है, C भी पॉजिटिव हो सकता है. तो उस पॉइंट पर आप देखेंगे कि कोई कंडक्शन नहीं होगी, एंड दैट इज नथिंग बट 30 डिग्रीज. अब इसको जरा गौर से देखिएगा. सो 30 डिग्रीज इज द नेचुरल डिले. 30 डिग्री से पहले कोई कंडक्शन हो ही नहीं सकता. सो फर्स्ट डिले यू हैव टू जनरेट इज 30 डिग्रीज. इट इज नेचुरल डिले. उसके बाद फायरिंग एंगल डिले, उसके बाद T ऑन, और उसके बाद डिले 4. डिले 4 क्या होगा? T ऑन के बाद क्या है? 60 माइनस T ऑन. ये है ना 60, यहाँ से 60 है और ये आपका T ऑन है, तो ये डिले आपको कितना हो जाएगा? D4 जिसको कह रहे हैं, 60 डिग्रीज माइनस T. तो दीज आर द डिलेज. यही खेल है और कोई बात नहीं. इसकी आपको प्रोग्राम लिखनी होगी. डिले 1 is 30 degrees which is natural delay. Delay 2 is the firing angle delay which depends on which firing angle you want to run the bridge. Delay 3 is the turn on time, and delay 4 is 60 degrees minus, and 60 degrees is nothing but 3.3 milliseconds. 1/3 था ना, 20 का 1/3 कितना हो गया? 6.3. 163.32. 163.20 का 16 करोगे तो 3.3 मिलीसेकंड से आएगा. सो नाउ द प्रोग्रामर शुड बी, पहले आप सबसे पहले क्या करेंगे? डिले 1 कॉल. व्हाट इज द मेन प्रोग्राम. बाकी आपका सब रूटीन हो जाएगी. ये सारे डिलेज जो सब रूटीन वो चाहे किसी भी लैंग्वेज में होंगे, सब रूटीन्स आपको लिखने होंगे. पहला हो जाएगा, राइट डाउन द स्टेप्स. फर्स्ट बी कॉल डिले 1. राइट डाउन द स्टेप्स. कॉल डिले 1. सेकेंड स्टेप क्या होगा? डिले 1 का 30 डिग्री होगा. उसके बाद कॉल डिले 2, फायरिंग एंगल. कॉल डिले 2. अब क्या होगा?
out 01 हेक्स। उसके बाद कॉल डिले 3, तो आपका ये मेंटेन हो गया। उसके बाद आउट 00 हेक्स, कॉल डिले 3, out 00 hex, and then call delay 4. This is the main program. What is the main program? Call delay 1, call delay 2, then call delay 2 हो गया ना, then out 00 hex, out 01 hex, then call delay 3, and then out 00 hex, then repeat. तो यह आपका पल्स ट्रेन बन गया ना। अब आपको इस पल्स ट्रेन को सीक्वेंशियली वहां देना है। अगर एक साथ दे दोगे तो क्या होगा, सारे एक साथ आएंगे शॉर्ट सर्किट। सो यू हैव टू पुट इट सीक्वेंशियली। हाउ विल यू डू इट? आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, कैसे सीक्वेंशियली करेंगे। पहले में आपको देना है T1 और T2 को। ओनली T1 and T2 should fire so that these two thyristors are fired, rest of them should not. तो क्या ये पल्स ट्रेन अगर भेजेंगे तो होगा? नहीं होगा, नहीं होगा ना। तो आपको T1 पर चाहिए, ये चाहिए, और इसके बाद बीच में सारा वो चाहिए, और फिर कौन सा चाहिए? T2 चाहिए, उसके बाद सारा लो चाहिए। T1 चाहिए और T2 चाहिए, बाकी सारा लो। तो कैसे कर सकते हैं? Here you have to write an intelligent word. इंटेलिजेंट वर्ड पे बिट्स, आपको बिट जो है 1 हाई होगा, बिट 2 हाई होगा, रेस्ट 0। आप कोई सा भी सीक्वेंस यूज कर लीजिए। अगर आपने सीपीयू यूज किया है, माइक्रो प्रोसेसर यूज किया है, तो उसके बाद आपको पीपीआई एक चिप लगानी पड़ेगी। अगर आपने माइक्रो कंट्रोलर यूज किया तो उससे अकॉर्डिंगली आप बिट्स निकाल सकते। यू हैव टू जनरेट एन इंटेलिजेंट वर्ड। इंटेलिजेंट वर्ड विल बी T1 will be high, T2 will be high, and rest all T3, T4, T5, T6 all low. Next sequence क्या होगा after 60 degrees? T1 हाई रहेगा और T6 हाई रहेगा, बाकी लो हो जाएंगे। तो आपका पैटर्न इस तरीके से होगा। Write the intelligent word like this. इसी तरह सब में इंटेलिजेंट वर्ड, सब रूटीन को आप कॉल करो आपका प्रोग्राम। ये अब एक चीज जरूर है कि इसको सर्किट में कैसे कन्वर्ट करें 5 मिनट्स में। एक्चुअली आई हैव टेकन 2 एग्जांपल्स ना, इट वाज ओनली 1 एग्जांपल का क्लास। टाइम आप बहुत कम देते हैं। ब्रेक भी करनी है, करेंगे ब्रेक 5 मिनट में करेंगे। सो हाउ विल यू सीक्वेंस इट? एक सीक्वेंस तो आपने कर दिया, ठीक है। आप इसकी सर्किट में क्या क्या सोचते हैं? इफ यू डोंट मैच दिस विद द सप्लाई, सप्लाई आपकी जिस तरीके से जा रही है उसके साथ अगर आपने पल्स ट्रेन को मैच नहीं किया, देन व्हाट विल हैपन? मिसफायर, शॉर्ट सर्किट एक्सेट्रा। उसके लिए क्या आपको करना पड़ेगा? यू हैव टू यूज ए डिवाइस कॉल्ड ZCD. What is this? Zero crossing detector. Zero crossing detector. Can you tell me what is a zero crossing detector? थोड़ा सा इसको मिटा दे तो आपको समझाते हैं। कंपैरेटर, एग्जैक्टली। ऑप एम्प से भी बना सकते हैं आजकल डिजिटल कंपैरेटर्स आ रहे हैं। You see, if your sinusoidal AC is like this, here is 1 0, here is 1 0, and here is 1 0. यहाँ पर आपकी मैग्नीट्यूड्स क्या है? 0 है। अगर मैं इनको पढ़ लेता हूँ तो मैं इसके साथ अपने पल्सेस को भी मैच करा दूंगा। वही करता है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्ट। जीरो क्रॉस डिटेक्ट करता है। हाउ विल यू डिटेक्ट इट? एज यू सेड, हु सेड कंपैरेटर? कंपैरेटर। अगर मैं यहाँ पर ऑप एम्प यूज करूं और उसको फिर यहाँ मेंटेन करूं, फिर ऐसा यूज करूं, फिर ऐसा करूं, फिर ऐसा करूं, दिस इज नथिंग बट अ स्क्वायर पल्स जो कि ऑप एम्प से हम जनरेट कर सकते हैं। व्हाट हैज बीन डन एट द जीरो क्रॉसिंग, पॉजिटिव एज इज बीइंग generated, then it is maintained, the negative edge is generated, then again it is maintained, and again a positive edge is generated. So this is nothing but a comparator. ये क्या कर रहा है? कंपेयर कर रहा है जीरो के साथ।
मैग्नीट्यूड को कंपेयर कर रहा है, वहीं पर एक पॉजिटिव एज या नेगेटिव एज जनरेट कर रहा है, एंड इन बिटवीन टाइम ये उसको सस्टेन करेगा. यू कैन सिंपली यूज ए कंपेयर. तो यहां पर आपको, सिंस इट इज अ 3-phase सप्लाई, here you have to use 3 such Z crossing detectors. One between phase A and neutral, another between phase B and neutral, and third between phase C and neutral. और एक ही रेटिंग की आपको कंपैरिजन ZCD की तरह यूज करना पड़ेगा. तो ये उसको कंपेयर करके क्या करेगा कि यहाँ पर आप पल्स चाहिए या यहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, उसकी जो टाइमिंग है उसके साथ ही मैच. तो आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी, आपकी सर्किट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है. One thing is this. Second thing, चूंकि ये जो थायरिस्टर ब्रिज है, इट इज अ पावर ब्रिज, यू आर यूजिंग 3-phase पावर, लेकिन इसको कंट्रोल किससे कर रहे हैं? माइक्रो प्रोसेसर या माइक्रो कंट्रोलर या पीसी, जो कि बहुत लो वोल्टेज पे काम करता है, उसकी सप्लाई वोल्टेज. तो व्हाट डू यू नीड इन बिटवीन? व्हाट डू यू नीड? जब हाई पावर डिवाइस एंड लो पावर डिवाइस को एक साथ आप काम करते हैं, तो क्या चीज चाहिए होता है बीच में आपको? What is that? Isolator चाहिए. Very good. You need an isolator. Isolator could be either a transformer, that's it, isolation transformer, or it is an optocoupler, etc. तो ये भी आपको लगाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जो पल्सेस आएंगे वो आपकी थायरिस्टर बनेंगे आपके माइक्रोप्रोसेसर से, लेकिन जाएंगे ब्रिज पर. तो वो पल्सेस काफी एम्पलीट्यूड कम भी होंगे. इट विल नॉट बी एम्पलीफाई करना. सो यू नीड रिक्वायर ZCD, you require isolator, and you require amplifier. तो हार्डवेयर क्या क्या चाहिए आपको इस पूरे प्रोजेक्ट को बनाने के लिए? The hardware you require is number 1, the thyristors, 6 number thyristors. They should be absolutely matched. Rating आपकी लोड के हिसाब से होनी चाहिए. You require microprocessor and PPI, or you require microcontroller, or you require PC, or you require PLC. Then you require ZCDs. Then you require isolator. You also require an amplifier. तो ये आपका ब्रिज बन गया. अब जैसे मैंने आपको बोला कि जैसे PPI है, मान लो माइक्रोप्रोसेसर से आप कर रहे हो, तो माइक्रोप्रोसेसर में जो PPI होता है उसके 8 पिन क्यों होते हैं? हाउ मेनी पिन्स यू नीड हियर? यू नीड ओनली 6. T1, T2, T3, T4, T5, T6, बाकी आप रद्द कर. उनकी जो इंटेलिजेंट वर्ड है वो आप जनरेट कर लीजिए. So accordingly your software will proceed. Only thing is, suppose you want to vary the firing angle, अपने आप लोड चेंज हो firing angle. Otherwise तो आपको बार बार टाइप करना पड़ेगा ना बोर्ड पर, वो नहीं चाहिए, वो सेमी ऑटोमेटिक हो जाएगी. If you want to make it automation based automatic, you have to have a table, big table, lookup table being used. That you write this speed, this firing angle, this is the count. This speed, this is the firing angle, this is the count. We made very extraordinary lookup table आपको जनरेट करना पड़ेगा. If you do it, then it will be automatic. This kind of project you can take up. I think by these 2 examples, I have tried to create some interest in you in what is automation. And one step further is the intelligent automation, that is intelligent instrumentation. उसमें this is programmed automation. There you can have robots, there you can have intelligent algorithms, and that particular device is known as intelligent instrumentation. वो इस क्लास में नहीं हो सकता है आपको पता. Thank you. Any questions if you want to ask? Let us have the interaction with the centers one by one and ask if they have any doubts. Vakna Ghat. Sir, any doubts? No doubt, ma'am. Okay. RT Engineering College, Ghaziabad. Sir, any doubts you have? No, ma'am, no doubt.
PVP. PVP, Vijayawada, Vijayawada. Andhra Pradesh. Oh. इनकी रिसेप्शन बहुत क्लियर है देखिए. Oh. Yes, Vijayawada, any doubts you have? Oh, you believe it. इनका एक्चुअली लैपटॉप इधर पड़ा होता है. Then they have to come here and help. Ladies. Ma'am, please turn on the mic. Hello, ma'am. Yes, ma'am. Yeah, we don't have any doubts, ma'am. The seminar is very good. Okay, ma'am. Thank you. Akhilesh Tripathi ji. MMU Maulana. Yes, sir. Tripathi sir. हाँ मैम, मैम बहुत बढ़िया चल रहा है. सरकार तो बस ऐसे ही है, जबरदस्त. ये कुछ बोलते हैं तो Okay. ग्रेट. हाँ. Thank you. Okay, now because we are running short of time, we'll have a quick tea break for around 10 minutes and we'll come here again after 10 minutes. Okay? Thank you. Oh, Thank you, sir. Yeah, I would Thank like to extend my gratitude to Chhaterji sir for giving you such an enlightening lecture on speed control of DC shunt motor. I think sir has told two and three applications also, and that will give that will show a path to the students who can develop such projects also based on these projects. Thank you, sir. Thank you.